अब हम बात करेंगे केमिकल सीक्वेंसिंग मेथड की। सांगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसके 3 या 4 वेरिएंट्स की हम बात कर चुके, वो बेसिकली एंजाइमेटिक मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं पॉलीमरेज, दैट इज़ गोइंग टू सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, और जहाँ पे भी वो टर्मिनेट होगा तो उसको हम सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो मैक्सम गिलबर्ट मेथड है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें हम किसी किस्म का स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं करते, रादर वी बेसिकली deal with the DNA fragment and we are going to degrade some of the nucleotides in this segment of the DNA, and later on the DNA is going to be processed to get breaks at that particular point. अब इस सारे प्रोसीजर को देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले एक एंड को रेडियो लेबल्ड करना है ताकि हम ये आइडिया कर सकें where is the starting point. So radio label can be done again using the phosphate 32, and then 4 or 5 reactions can be prepared in parallel, and each reaction is going to end up at a different nucleotide. Like for example, if we look at this picture, इस पिक्चर में हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को हम जब रेडियो लेबल करेंगे 5 प्राइम एंड पे, रेडियो लेबल करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय डिफरेंट बेसिस इन डिफरेंट ट्यूब्स। 4 रिएक्शंस और 5 रिएक्शंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इस ट्यूब में जितने भी ग्वानोसिन रेजिड्यूज हैं डीएनए में, they are being destroyed. यहाँ पे a mixture is going to be produced which contains A and G being destroyed, T and C being destroyed, and C being the destroyed. On the basis of these destructions or damages to the nucleotides, we call them as G reaction, A plus G reaction, T plus C reaction, and C reaction. 2 steps involve होते हैं इस डिग्रेडेशन या डैमेज में और ब्रेकेज में। नंबर 1 इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक बेसिस अंडरगो केमिकल मॉडिफिकेशन बाय ट्रीटमेंट विद डिफरेंट केमिकल्स। मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कैन अकर, एंड आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन वी आर गोइंग टू रिमूव these bases from their sugars. आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर याद है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक न्यूक्लियोटाइड जो है that basically have a sugar, and then this is the structure of the sugar. There you have the phosphate attached, and there the nitrogenous base is attached. This phosphate is making a phosphodiester bond with this nucleotide, and here we are going to have the next nucleotide. So the first step is going to be removal of this nitrogenous base. When this nitrogenous base is removed, then this bond is going to be broken and this bond is going to be broken, so that this kind of damage is going to be created to the DNA, and the modified nucleotides or the bases are going to be removed from the DNA strand. अब different न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली, दे आर मॉडिफाइड डिफरेंटली। लाइक अगर ग्वानोसिन को देखा जाए, इट कैन गेट मिथाइलेटेड एट नाइट्रोजन 7 एट pH 8 बाय यूजिंग डाई मिथाइल सल्फेट, DMS भी कहा जाता है इसे। A और G को देखा जाए, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय पिप्रिडिन, एंड द रिजल्ट इज वीकनिंग ऑफ द ग्लाइकोसिडिक bonds of adenine and guanine residues by protonating of the nitrogen atoms in the purine rings, resulting in the depurination. C plus T is the reaction in which hydrazine opens up the pyrimidine rings. और जब pyrimidine ring जो है एक 6-cornered ring है, the structure is opened up, it is no more nitrogenous base and it can easily be removed. C reaction को देखा जाए, सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में साइटोसिन जो है हाइड्रोजिन के साथ एक्टिवली रिएक्ट करता है, और अगर सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में हाइड्रोजन देंगे तो मोस्ट ऑफ द सीज दे आर गोइंग टू बी मॉडिफाइड और रिमूव्ड एज कंपेयर टू C plus T.
और एक ऑप्शनल हमारे पास रिएक्शन है जिसमें ए और सी की रिमूवल, एडिनोसिन और साइटोसिन की रिमूवल के हवाले से डिस्कशन की जा सकती है। दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड ए रेजिड्यूज आर गोइंग टू बी स्ट्रांगली क्लीव्ड एज कंपेयर टू सी रेजिड्यूज। इसी किस्म की मॉडिफिकेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं गिवन सैंपल ऑफ डीएनए के साथ, जी रिएक्शन में G+A T+C और सी रिएक्शन में और A more than C रिएक्शन में, these chemical treatments they cause the modification of the nucleotides, and after this modification we are going to incubate the tubes, the reaction tubes along with the piperidine at 90 degrees centigrade to ensure that sugar phosphate chain is going to be broken down and the DNA fragments of different sizes can be obtained.